I wanted to have one of the finest speakers. We have with us Ruchita ji. She has spoken to us about, Namaste Ruchita ji. She has already spoken to us about Yuktahar. Yuktahar के हमने session, 2 session कर चुके हैं. This is a 3rd in her series. हमें पता है कि जैसा अन्न वैसा मन. हमें पता है कितना जरूरी है कि हम सीजन्स के अकॉर्डिंग खाएं. जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि हर सीजन के हिसाब से बॉडी को क्या चाहिए. तो चलिए आज देखते हैं कि समर यानी गर्मी में कैसे खाने के चाहिए. हाउ, जैसे कहा जाता है कि सम्यक आचार विहार, किस तरह से क्या चीज खाएं, व्हाट इज राइट फॉर योर बॉडी as a reflection of the season outside. Today we have with you Ruchita ji. We have with us Ruchita ji, and we are all aware. Let me share that Ruchita ji is a multi-disciplinarian with an M.Phil in education, masters in Sanskrit, specialization in Vedanta, masters in Biochemistry with specialization in foods and nutrition, P.G Diploma in Business Management, B.Ed, P.G Diploma in Comparative Mythology, Diploma in Yoga, Ayurved, Policy Studies, Manuscriptology. Oh my God, मुझे तो ये पढ़ना पड़ेगा कि इन सब का मतलब क्या होता है. Counselling and Bharatanatyam also. And also she is working towards her PhD. She is a gold medalist in Sanskrit, recipient of prestigious Jagannath Shankar Seth Scholarship. She has authored to help books, created over 4,000 modules of digital learning material for Sanskrit for educational institutions. She is an independent researcher conducting experiential learning workshops and motivational lectures for adolescents. She conducts courses on Yuktahar and holistic well-being. Please excuse me. And Abhi, she is currently working on a project to enhance the socio-economic growth, excuse me, and development of the Jammu Kashmir. Excuse me. As you can see, we need to be in good health. Ruchita ji, over to you. Summer foods के बारे में हमें बताएं. Namaste. And good morning, everyone. Thank you so much, Gitanjali, for the kind introduction. And I'm happy to be back. This is something which I enjoy. Among the 2 things that I enjoy the most, one is dance, which was International Dance Day yesterday. And though I didn't dance, it was the mind that danced. And today, this is the other aspect of one of my favorite things, that is speaking on nutrition, learning and speaking on nutrition, and more focus on Indian nutrition. So thank you so much, and I'm happy to be back. I'm sure everybody's looking forward to holidays and all that. Just a little bit, am I clearly audible to all? Because I left my earphones in Jammu last evening when I came, and I hope I'm not using it. So is that okay? Oh, right. Very clearly audible. Okay, thank you. So there will be a few questions in between which you can answer in chat, and thank you for the welcome. There is those who are happy to hear me again, so thank you to them as well. So let's take this further. I'm sure everyone's already bogged down by the heat, and we have more to come. So this is like something which is not the peak yet. The peak is yet to come. So how do we handle it? I know most of us are quite aware, I mean, that when it is summers, you have to keep yourself hydrated. Then you need to keep your head covered, this, that. And most of us are generally in a space which is quite cool, whether it's our offices or our homes or the cars. And thanks to the Indian the railways, we also now have AC railways, trains in Mumbai as well. So, things are getting cool for us when we travel and when we perform our activities. But this is actually causing heat, and we are not going to talk about environmental changes and all that here. But how do we combat the fact that despite we trying to keep ourselves comfortable because of the elements that we have which can generate coldness for us, yet our body gets heated?
And why does the body get heated? Because the surroundings are heated. Why are the surroundings heated? Yes, it's a natural course. This is the way for the environment actually to take care of some of the ill effects that could otherwise be present in the environment. How? You all know that now, those of us who have seen a little bit of villages and all, you will see that farmers before the rains will, create furrows. They will have plowed their fields. And why do they do that? They open up the soil so that the heat in the sun can actually destroy some of the microbes, some of the bacteria, some of the fungal spores, some of those pests which would otherwise affect our crops. Now you must be wondering, why am I talking about this when we have got nothing to do? None of us are farmers here. But just as you understand the reason for the heat that is there outside, we have to understand that this heat is necessary. Yes, we counter it with cold by using a lot of cold things because we need to maintain our body temperature and we need to keep ourselves moving. So when you see that it is hot outside, obviously you will see that the land, you will see the, when you see the soil, you will see it is cracked, it is almost really hard. You will see the water content, the moisture content in it has gone. So what you see outside is a reflection, or your body is a reflection of what your surroundings are. So how do you expect your body to be? You may type in chat whatever you feel is the answer. What is it that your body is losing on because of the heat outside? Okay, I'm awaiting a few answers. Yes, water. Okay, that's right. So the moisture content, we are losing out on moisture content. We need to also understand that the body is losing out on what we refer to as the snigdha padartha, that is the oiliness that is there, the unctuousness that is there. So water, moisture, which was prevalent, which was there in our body earlier prior to the Vasanta season, the earlier season, is now diminishing and is going off almost, we are losing a lot on it. I'm sure you all can connect to the Glucon-D ad where, you have the sun and there is a straw, and that straw is the sun is sucking out all the, water as if the moisture from us. So that is literally what's happening. What we are also losing on is the oiliness, the snigdha padartha in our body. Now, these two are very big losses, because when this happens, you have to understand that two things that are generated in our body, one is heat and the other is air, the wind element. What I'm coming to is trying to get to the fact that there is a whole lot of vata element which is increasing in our body as the dryness outside increases, right? So in summers, you will see that the body's tendency is to have a lot of vata or a lot of wind element apart from dryness or rukshata. Now, these need to be countered because they can have their ill effects. So how do we counter these? You might have also experienced sometimes that there is a lot because of the heat, even though you have the air conditioner and all that on, at night you will see that there is lack of sleep. Some people just don't sleep well. And you wonder what is it that you have done that you're not sleeping well. You may have had your meals, you may have had everything, but still you feel that you're not sleeping well. And this might be extremely or more so in summers. So then how do we counter this? So these are some of the questions that we are going to answer for ourselves and try to understand the logic so that we can, take care of ourselves without, popping pills and popping chemicals into us, which will, further drain ourselves, not understanding what's happening to our body. So let's take a bit to understand this. Now, when, like I said, the vata element is increasing, we are losing out on the jala, that is the apa tattva, the water tattva. We are losing out on the oiliness, that is the joints and all. You will see sometimes, most of the time, you will see the joints cracking and all these things increase. Sometimes you will also see the impact on our central nervous system, because when vata increases in the body, you will see that it affects the nervous system. Sometimes the sensation, sometimes the hand goes numb, or these kind of things also can happen because of increased vata. You will also sometimes experience pain. You might not have hurt yourself or anything, but some earlier hurt because of the vata element. There might be pain in the body for some reason. So it is vata which causes all this. Now, what to do? What do we do to counter this? One is, yes, you stay hydrated, but now understand the logic behind staying hydrated. That way you will hydrate yourselves better. Better means not just drinking water. Water is not the only way to hydrate.
there are things which need to cool the system, because as the temperature outside increases, the body temperature increases. So to cool the body, what is it that helps? So you will see fennel. All of us know variali, body shape. Okay, some of us who come maybe from Gujarat and all, at this season, generally in their homes will prepare a kind of, a sharbat kind of a thing, which will have elaichi in it. That is your cardamom, will have fennel seeds or body shape. So these will be there. Then there'll be dhana, that is your coriander seeds. Why do we use these? There'll be rose petals. These are all things which are going to cool the system, right? So we need to use these in a very strategic way, which will not imbalance our state of being as we are. We may, somebody might be Pitta Prakriti, somebody might be Kapha Prakriti, somebody might be Vata Prakriti, combination of these. But irrespective of our Prakriti, some of these will definitely be helpful to all. And therefore, we need to make use of this effectively. So one thing that you can start your day on in this season, you can also use this across the year, but this is something which all of us can really do. It's very simple. You can do this for your individual self, for your family. I'm giving you proportions for a liter. For a liter, 1 liter of water, you need half a teaspoon of whole coriander seeds. You need half a teaspoon of whole cumin seeds, jeera, and you need half a teaspoon of body shape or variali or anise seed, what you call it, fennel seeds. Okay, you need half of. So you take a liter of water, heat the water. Once the water is heated a little, put half a teaspoon, not more, of these whole, not powdered. So put whole of these and allow it to boil for 10 minutes on a low flame. And following that, when it is hot, strain it and put it in a thermos. Okay, each of us can have, everyone can have about 50 ml of this, a little bit of this, and rest of it, put it in a good thermos so you can sip through it through the day. Now, what happens? How does this? Can you repeat what the three ingredients? I will repeat. Ek saunf hai, or? See, go in order, go in alphabetical order, so it's always easy. So you have coriander, CO, coriander seeds, dhana, akka dhana, sabut. Then you have cumin seeds, jeera. And then you have fennel seeds, that is saunf. Okay. Use the normal variety. Saunf don't use the salted variety that you use for your mukwas, etc. Just use these. And just need half a teaspoon of these. So you boil it in 1 liter. This is measure for 1 liter of water. And each time just drink a little. So you can start your day on this. So it helps to cleanse the system, also cool the system. See, I have a simple formula where you can get ek se do cheeze kar sakte, ek ke saath ek free, as in not free that way, but you get better benefit by doing one single thing. You can do that. So here it will cleanse your system as well as cool your system, because fennel has, saunf has this quality of cooling your system. At the same time, it takes care of vata, okay, the wind element. You will also know that when you wake up in the morning, you will see sometimes that, there is a lot of vata. You might sometimes burp, or you will, the air will be released through the, through the anal region, which we refer to as the apana vayu. So this increases, this is high. So to take care of it, the hot water as well as the fennel seeds are very useful to take care of vata, which anyway tends to be high in the summer seasons. So this is one thing you can do. And what you have taken is about 50 ml, half a cup or so. Rest, take it during the day, sip it hot. Do not reheat it. Do not reheat it, and finish it by about 4 or 5 p.m., not after sunset. You don't drink this after sunset. So this is something which will cleanse and cool your body as well. Now, there are those of us who cannot sleep well during summer. Okay. One reason you can't sleep well is that those of us who've been staying up late, we cause our bodies to be loaded with pitta, and the liver doesn't get detoxed, and that is the reason why you can't sleep well. But to counter this, what you can do is put your feet in cold water. Okay, some of you may have even put Epsom salt in it if you like, but otherwise just keep your feet in cool water, plain water or cold water for some time, so your body cools down. That way you can sleep better. I know most of us feel that a warm water bath will put us to sleep like little babies, small babies, where generally you bathe them and then they go off to sleep. But in the summers, you can do with plain or cool water. Put your feet in a bucket of water so that you feel relaxed, and then you will sleep better as well. Another thing which helps us sleep better in the summers is using ghee. Toop. So this, ye jo hai ghee, if it is gai ka ghee, good, but you have to use it externally, so that also will be useful.
Like I said, anyway, vata element is on the rise. You need that vata to come down. So having a spoonful of cow ghee in the morning is good. This is not going to, don't have to worry about cholesterol, etc. You're just taking a teaspoonful. Anyway, your body needs oils, ghee in this season. So make sure that you have not plenty of ghee, but sufficient amount of ghee. आप अपनी रोटी जब खाते हैं, wheat is a good thing to have during the season. Rice, wheat, these are good cereals to consume during the season. So when you're having your rice and dal, put a spoonful of ghee. If you're having your roti तवे से निकालने के बाद apply ghee, not the paratha types. We don't want to, add to saturated fats like as in trans fats there. So roti भी है, roti के ऊपर भी आप घी लगा सकते हैं. So make sure that you have ghee in, because it will help lubricate the joints and reduce vata. Okay, another thing, like I said, you can apply a little bit of ghee. One more question. So one more question regarding ghee is that morning में आप समर में भी लेना है या विंटर में भी लेना है, या दोनों ऑल टाइम ऑल थ्रू आउट द ईयर लेना होता है घी ऑल टाइम ईयर लेना है? अभी मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ बिकॉज वाटर एलिमेंट ऑलरेडी हाई एंड स्पेस जो है उसको कट करने के लिए you need to have water, you need to have oil and water will cut space. See, this is the logic of the Pancha Mahabhutas. There is the 5 elements that are Prithvi, Aap, Tej, Vayu, Akash. That is the earth, then the water, then you have fire, then you have wind, and then you have the emptiness, that is space. So इनमें जब imbalance हो जाता है तो इसके कुछ ना कुछ रोग या कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होते रहते हैं, और इनका एक कनेक्शन रहता है, एक दूसरे को पूरक रहता है, एक दूसरे को खाता है. जैसे यू कैन सी मक. व्हाट इज मक? कीचड़ जो है. व्हाट इज कीचड़? नथिंग बट पृथ्वी एंड वाटर, राइट? वो कीचड़ हो जाता है. सो जब पेट में कीचड़ बन जाता है जो रेनी सीजन में होता है, उसे कट करने के लिए हम वहां पे स्पाइस यूज करते हैं, या कुछ स्पाइस, दैट डेलिकेट स्पाइसेस यूज करते हैं. सो ऐसे हर टाइम हमें अलग अलग चीजें यूज करनी है अधिक मात्रा में. अभी के प्रॉब्लम क्या है? अभी के सीजन में वाट एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट ज्यादा है, तो स्पेस को भरने के लिए हमें कुछ चाहिए. दैट इज वाटर विल हेल्प हियर, पृथ्वी विल हियर. सो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें यूज करनी है ऐसी चीजें. सो देयरफॉर इन आवर घी, आई विल आंसर द क्वेश्चन विद घी, नॉट मिक्सिंग द अदर्स. तो घी हम जो लेते हैं, लेना चाहिए इस सीजन में. सो आप राइस दाल के साथ घी लें, आप चपाती के साथ घी लें. कई जन इवन मॉर्निंग वाटर में आप गर्म पानी समझो पीते हैं सुबह, तो उसमें 1 चम्मच घी डाल के भी पी सकते हैं. इट इज हेल्पफुल, एंड दोज हु हैव कॉन्स्टिपेशन, उनके लिए ये और भी अच्छा है, क्योंकि गर्म पानी से तो ऑटोमेटिकली बाउल मूवमेंट होती है, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, आप फाइबर कम खाते होंगे, तो बल्क ऑफ द स्टूल हार्ड यदि होता है तो फीकल मैटर पास करने में बहुत दिक्कत होती है. तो घी डालने से, पानी में घी डालने से, ये जो सारक, घी सारक होता है, सारक मीन्स मूवमेंट क्रिएट करता है, तो पास करने के लिए, स्टूल्स पास करने के लिए या न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम ये इसके वजह से होता है. सो हैविंग 1 स्पूनफुल ऑफ घी, काऊ का घी, शुद्ध काऊ का घी, in a glass of hot water is also helpful for those who have constipation, and especially so in this season. So this is one thing you can have. Abhi coming to the kind of foods to eat, remember जैसे हाँ बाहर हीट बढ़ती रहती है, शरीर में से हमारा बल जो है ना, स्ट्रेंथ जो है वो कम होते जाता है. सो जब आपका स्ट्रेंथ कम होता है, you may see that in summers you really, why do people relax a little in summers? Because that strength नहीं होती, शरीर में से बल निकल जाता है. और साथ में क्या हो जाता है? बल तो निकल जाता है आपके शरीर में से, आप देखेंगे कि एनर्जी जो है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है. आप देखेंगे यू हैव अ टेंडेंसी टू फील टायर्ड, वात ऑलरेडी हाई है. सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सो द फूड्स दैट यू ईट हैव टू बी लाइट, बिकॉज शरीर में पेट का डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम अग्नि कहते हैं, ओके, डाइजेस्टिव फायर जो है, आप देखेंगे मन भी नहीं करता ना, ये तली हुई चीजें समर में खाने का मन करता है क्या? मोस्टली नहीं करता. यू डोंट फील है भजिया वजिया. अभी कोई और सीजन में आप समोसा, बटाटा वड़ा खाना भी मन में आए तो खा लेंगे, लेकिन इस सीजन में लगता भी नहीं है. फ्राइड चीजें और खानी भी नहीं चाहिए. देखो, तेल चाहिए शरीर को, घी चाहिए शरीर को, बट नॉट फ्राइड. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सो हम तेल की मात्रा यूज कर रहे हैं हमारे फूड में, लेकिन तला हुआ नहीं खा रहे हम. उसमें तेल में हमें फ्राई करके नहीं खाना है. तो लाइट फूड्स हैव टू बी लाइट. इस सीजन में दाल की मात्रा कम करनी है, ओके, दाल कम करनी है, लेकिन प्रोटीन चाहिए हमें. सो कैसे करेंगे? तो लेग्यूम्स जो है, जैसे मूंग, आप मूंग की दाल यूज कर सकते हैं, या साबुत मूंग, अक्खा मूंग यूज कर सकते हैं.
ये हम ज्यादा यूज करें। बट हैवी जो आपके लेग्यूम्स रहते हैं ना, हैवी लेग्यूम्स लाइक छोला चना वगैरह, ये जो है ये थोड़ा हमें कम करना है, क्योंकि वात बढ़ता है इससे। चलो अभी वात बढ़ता है तो इसको कट करने के भी साधन है, बिकॉज यू विल से अरे आई विल लूज, दोज ऑफ यू आर द प्रोटीन टाइप्स हु डोंट लुक एट फूड एज अ होल, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। तो ये जब ऐसे देखते हैं तो आप कहेंगे फिर हमें खाना क्या है। सो ये सीजन ही ऐसा है कि आपको हल्का खाना है, हल्का आहार लेना है, दाल चावल सब्जी। ये अभी सब्जियां भी कौन सी इसमें, यू नीड टू ईट दो सब्जीज विच विल गिव यू वाटर, विच विल गिव यू हाइड्रेशन। तो ये जो हम बोलते हैं ना क्रीपर वर पर आने वाले जो फळ भाज्या, मराठीत आम्ही फळभाज्या म्हणतो, तो ये जो है पम्पकिन है, कद्दू दूधी, ऑल दीज गोर्ड वैरायटी जो है, गोर्ड GOURD, स्नेक गोर्ड है, रिच गोर्ड है, पडवल है, फिर आपका वो दोड़का है, तुरिया है, ये जो है फ्रूट वेजिटेबल्स जो है ये खाने हैं। लेकिन कड़वा इसमें कम करना है। सो टेस्ट में हमने कहा था, इफ यू रिमेम्बर इन अर्लियर सेशन वी सेड षड रसाः पुरुषेणेह भोक्तव्या बलमिच्छता अम्लस्तिक्तः कषायश्च मधुरो लवणः कटुः, जिसका अर्थ है जिस आदमी को, पुरुष मीन्स एनी ह्यूमन, पुरुष इज नॉट लाइक मेल, ओके, कोई भी आदमी जिसे बल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, उसने ये 6 फ्लेवर्स जो है, 6 रस जो है शरीर में, उनका सेवन करना चाहिए। कौन से? अम्ल, सार, खट्टा, तिक्त मीन्स कड़वा, ओके, नॉट तिखट, तिक्त, कषाय मीन्स एस्ट्रिंजेंट, जो तुरट हम कहते हैं, आंवला का जो टेस्ट है वो, मधुर स्वीट, लवण सॉल्ट, एंड कटु मीन्स स्पाइसी पंजेंट। ये 6 नॉर्मली हमें लेने हैं मात्रा में। अभी इस सीजन में इसकी मात्रा कैसे करेंगे? तो इसमें आप देखेंगे मधुर, लवण एंड अम्ल, ओके, इनका सेवन मधुर, अम्ल, लवण, दिस शुड बी प्रिडोमिनेंट। एंड जो वात को निर्माण करते हैं, कटु, कषाय एंड तिक्त, इसको बाजू में, ओके, वात किससे बढ़ता है? कटु, तिक्त, कषाय से। सो कटु मीन्स पंजेंट, तिक्त मीन्स बिटर, एंड कषाय इज एस्ट्रिंजेंट। सो इस सीजन में, समर सीजन में, इनकी मात्रा थोड़ी कम ही रखें। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेथी नहीं खानी है, लेकिन कम मात्रा में। जैसे नॉर्मली हम जब कड़ू चाहिए, सॉरी बिटर जब चाहिए, तब हम मेथी के दाने खाते हैं, मेथी खाते हैं, हम करेला अधिक खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं। तो इनकी मात्रा कम करनी है। हफ्ते में एक आध बार हम खाना है, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इससे। लेकिन मधुर लवण एंड अम्ल, आप देखेंगे इसी सीजन में आपको कच्ची कैरी मिलती है। हम पन्ना बनाते हैं, मराठी मध्ये पन्ना म्हणतो आम्ही, ओके, गुजराती में पन्ना कहते हैं। सो ये सब जगह बनता है ना आम, ये जो आम, कच्चा आम है, इसमें गुड़ वगैरह, इसमें भी ये सब चीजें क्यों डालते हैं? बिकॉज शरीर का दाह जो है, हीट जो है, उसे कम करता है, पित्त को कम करता है, वात को कम करता है। इसलिए उसमें जब हम बनाते हैं गुड़ डालते हैं, उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे नमक भी डालते हैं, उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा अभी केसर डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, कई ये कार्डमम, इलायची पाउडर डालते हैं, हम सूंठ डालते हैं, कई लोग थोड़ा सा पेपर भी डालते हैं। तो ये अलग अलग जगह के रेसिपीज थोड़ी बहुत अधिक कम मात्रा में बदलती हैं, लेकिन आप देखेंगे उसमें चढ़ने वाला स्पाइस जो है थोड़ा सा वो ऐसा है जो पाचक होता है और शरीर का दाह कम करने वाला होता है। सो आप देखेंगे कोकम शरबत इसी टाइम आपको मिलता है। गांव आप जाएंगे कोंकण में तो कोकम मिलता है, ये कोकम गार्सिनिया इंडिका, खटाई जो रहती है हम यूज करते हैं, महाराष्ट्र में कोकम है। आप देखेंगे इसी टाइम पे आप नींबू पानी का भी सेवन अधिक करते हैं। हम क्यों करते हैं? ताकि शरीर में ठंडा महसूस हो। इसी समय आप खस सुना होगा आपने, खस इज ये उशीर खस। सो खस का आप वो रस ले सकते हैं। खस पानी में भी आप मटका होगा आपके घर में, तो उसमें वो खस की मूली आती है, तो वो मूली धो के अच्छे से वही इसके एक छोटी सी गुंडी ऐसे बंडल बना के वो पानी में रख दीजिए। आप देखिएगा यू विल फील कूल। गुलाब की पत्तियां जो है ना, गुलाब वो वाला नहीं, वो जो देसी गुलाब रहता है ना, डार्क पिंक या लाइट पिंक, सो वो वाला गुलाब, उसकी पत्तियां, पंखुड़ियां जो है, पत्तियां या पंखुड़ियां, पेटल्स जो है, वो आप पानी में डाल सकते हैं। आपको लगेगा कि अरे इससे क्या होता है, एक्चुअली पानी की प्रॉपर्टी इससे चेंज होती है, क्योंकि ये जो पंखुड़ियां होती है इसमें से जो तेल रहता है उसका बाहरी बहुत कम मात्रा में रहता है ये, और उसकी सूदिंग एलिमेंट जो है ये आपके शरीर के दाह को कम करते हैं। अभी मैं गुलकंद, आई एम नॉट रिकमेंडिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हालांकि गुलकंद इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव ड्यूरिंग दिस सीजन, लेकिन
ये गुलकंद जो बाहर मिलता है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस ब्रांड्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें गुलाब कम और शुगर ज्यादा रहता है. सो इसलिए आप घर पे गुलकंद आराम से बना सकते हैं. इट इज वेरी इजी टू मेक गुलकंद एट होम. तो आप चीनी उसमें या चीनी का प्रमाण आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बना सकते हैं. सो इफ यू डोंट वांट टू मेक ए गुलकंद, जो सिर्फ ये रोज की पत्तियां जो है, इंडियन अपना रोज, डामस्कस रोज जो है, नेटिव जो हम बोलते हैं उसको गाउठी गुलाब, हाँ, लाइट छोटा सा रहता है वो, बिल्कुल से ऐसे जल्दी से मुरझा भी जाता है. लेकिन ये इसकी पंखुड़ियां आप सुखा के भी यूज कर सकते हैं. मैं क्या करती हूँ, इसको सुखाती हूँ और फिर थोड़ी सी चीनी के साथ इनको पीस के, उसकी पाउडर आप इलायची डाल के, वो भी आप नॉर्मल पानी में डाल के ऐसे पी सकते हैं. वो भी अच्छा लगता है, शरीर के लिए सूदिंग है. अनदर थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज, आप स्नान करते हैं तो स्नान के बाद ये खसका पाउडर, अभी सब तो चंदन वंदन इतना महंगा हम यूज नहीं करते, चंदन शीतल होता है, पानी में चंदन भी डाल सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आप कड़ू रहता है, चंदन का टेस्ट बिटर रहता है, लेकिन अंदर जाके वो बहुत ठंडा महसूस, ठंडापन देता है. और इसके लिए हमें बहुत सारा चंदन, एक मटके भर में आप थोड़ा सा चंदन का स्टिक डाल सकते हैं, या फिर चंदन का पेस्ट बना के वो पानी में भी डाल सकते हैं. एंड दिस सूद्स, कूल्स द बॉडी. ये सब कूल करते हैं बॉडी को, एंड दीज आर ऑल नेचुरल. अब आप देखेंगे तो ये बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी तो कूल हैं, वो सबसे बुरे हैं. कूल नहीं, वो आपके शरीर में एसिडिटी निर्माण करते हैं. Okay, apart from increasing sugar level, apart from making your bones porous, what you can do with those cold drinks that you get, all those fizz drinks, use them as your toilet cleaner, but you don't use your to clean it in your system. इनको आप दूर ही रखें. आप गन्ने का रस पी सकते हैं. गन्ने का रस इज वेरी वेरी तृप्तिकर, हम कहते हैं सेटिस्फाइंग. वो शरीर का दाह कम भी करता है. At the same time, it keeps you full, it keeps you satiated, you feel that sense of satiety, कि हाँ भरा सा लगता है, शांत सा लगता है. आप थोड़ा सा गन्ने का रस रोज रोज मत पिए. जो डायबिटिक हैं समझो, तो आप इससे थोड़ा सा ही लें, जस्ट अबाउट अ क्वार्टर ग्लास और समथिंग, थोड़ा सा आप लें इफ यू फील लाइक इट. बट अदरवाइज इट इज अ वेरी सूदिंग ड्रिंक, एंड उसमें बर्फ नहीं डालना. अब आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज आइस कोल्ड वाटर और कोल्ड वाटर. फ्रिज में पानी चला गया तो आपके पानी का प्रॉपर्टी एसिडिक बन जाता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है ये. ओके, बर्फ लेना या ठंडा पानी, आप ठंडा मटके का पानी पी सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रिज में रखा हुआ पानी शरीर में एसिडिटी निर्माण करता है. आपको लगेगा ये जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम माइट बी ठंडा, आइसक्रीम इज ठंडा बट इट विल कॉज एसिडिटी. अपार्ट फ्रॉम द शुगर एंड ऑल, वी आर नॉट टॉकिंग ऑल दोस थिंग्स, बट एक्चुअली एसिडिटी बढ़ती है. आप देखेंगे प्यास आपको आइसक्रीम खाने के बाद ज्यादा लगती है, क्योंकि वो शुगर कंटेंट उसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है. So इसलिए what appears to be cold is not really cold, because these are artificially cool. जो naturally cool है वो हम पिए. So अभी ये जो हम पानी is the main thing. But तेल, like I said, food में तेल का प्रमाण, कौन सा तेल, that you can use what you like, what you are used to. सिर्फ आप देखेंगे मस्टर्ड एंड तिल थोड़े हेवी होते हैं, एज इन हीट निर्माण करने वाले होते हैं. तो इफ यू आर नॉट ट्रेडिशनली यूजिंग इट, तो आप जानबूझ के इन्हें ना यूज करें. पर घुटनों को, आपके जॉइंट्स को इस सीजन में जरूर तेल का अभ्यंग करें, तेल यूज करें. आपको स्नान के पहले, सपोज ना, आई नो यू विल से इट इज रादर इनकन्वीनियंट, बट आई विल टेल यू हाउ इट इज नॉट इनकन्वीनियंट. व्हाट यू कैन डू इज, सपोज यू ऑल, आई एम श्योर सब लोग वर्कआउट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते होंगे, बिकॉज एवरीबडी इज बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस दीज डेज. तो ये आपको वो आपके इसके लिए चले जाने के पहले थोड़ा सा तिल का तेल नीज पर, एंकल पर ऐसे थोड़ा सा रगड़ के, उतना भी करेंगे ना तो भी ठीक है. फिर स्नान करते वक्त तो वो चला जाता है, दैट इज इट गोज अवे, सो दैट यू कैन यूज. हाँ, आई वाज टेलिंग यू अबाउट बेथिंग. खस का पाउडर आता है. खस ना, आपको ये आयुर्वेदिक दवाखाना में जाएंगे तो खस का पाउडर मिलता है आपको. सो ये खस का पाउडर भी शरीर को रगड़ने से कूल होता है. सो इसको one thing you can do is to apply it as a paste before while bathing, or what I prefer to do is स्नान होने के बाद थोड़ा सा पाउडर लेके just rub it all on your body. पाउडर एकदम बारीक होता है, सो इसके पार्टिकल्स रहते नहीं है. इट मेक्स यू फील कूल, सूदिंग लगता है. एंड एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू ना, इसके साथ में और भी कुछ बेनिफिट होता है. when you rub the powder ना, सेल्यूलाइट जो रहता है ना, आप देखेंगे कभी कभी ऐसे दबाएंगे तो ऐसे डिंपल्स निर्माण होते हैं सेल्यूलाइट के, फैट के छोटी छोटी गोलियां जो शरीर में बनी रहती है ना कभी कभी, तो ये ऐसे रगड़ने से ये भी टूट जाती है. सो यू कैन यूज दिस एज वेल, राइट. So these are some of the things you can do externally to your body to keep it soothing, keep it cold, and keep it cool.
other thing is in your vegetables, when you are using vegetables, what are the kind of spices that you can use? इस सीजन में मैंने कहा ना स्पाइस कम रखना है, so चिली वगैरह का प्रमाण जो है, चिली वाला स्पाइस keep it to the minimum. The spice that you can use a little is ginger. You can use a little bit of pepper because you don't use them in large quantities. ये जो है ना थोड़ी मात्रा में अपना इफेक्ट दे देती हैं, so it is fine to use it in small quantities. Okay, सूंठ है, ये जो जिंजर वाला पाउडर बनता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, पर गार्लिक जो है ना, गार्लिक से पित्त बढ़ता है, सो इस सीजन में आप वो कम ही रखें, गार्लिक कम ही रखें, जहां यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं. खजूर वजूर ये सब चीजें जो अच्छी है शरीर के लिए, लेकिन इस सीजन में आप थोड़ा उनको कम ही रखें. ओके, फ्रूट्स, यू कैन हैव फ्रूट्स विच आर द वाटरी फ्रूट्स. मेलन टाइप ऑफ फ्रूट्स इस सीजन में अधिक आते हैं, लेकिन जिसको डायबिटीज वगैरह है ये कम मात्रा में. एंड मेलन, वाटरमेलन कभी रात को नहीं खाना, सनसेट के बाद रात को कभी वाटरमेलन नहीं खाना, सीजन कोई सा भी हो. नेवर हैव वाटरमेलन एट नाइट. एंड जिनको डायबिटीज है वो कम मात्रा में थोड़ा सा खाएं इफ एट ऑल यू हैव टू. जिन्हें वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, दे वुड नॉट ईट दीज फ्रूट्स. वाटरमेलन, मेलन वाला वेराइटी ऑफ फ्रूट्स डोंट ईट इफ यू हैव वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम. आपके उस टाइम पे जिनको वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है वो एप्पल, पेयर, फ्लेशी फ्रूट खाएं. प्लम, पीच, ये जो आते हैं ना, ये वाले फ्रूट्स कैन बी हैड. हेवी फ्रूट्स लाइक बनाना, कस्टर्ड एप्पल, ये जो है जिन्हें डायबिटीज है वो थोड़े कम मात्रा में ही खाए तो अच्छा है, बिकॉज इससे जिनको जो जिन्हें डायबिटीज जनरली होता है उनकी टेंडेंसी होती है कफ प्रकृति, शायद नॉट ऑल, लेकिन वो रहते हैं टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट जब होता है, तो ये फल बाजू में रखें. कस्टर्ड एप्पल ना खाएं, बनाना ना खाएं. दिस इज अ जनरल रूल, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन. बट फॉर सीजनल फ्रूट्स में जिनको अच्छा लगता है एंड they don't have these problems, they can have a little bit of banana and all. These are fruits which will keep you trypt. Satiety, also water content इनका हाई रहता है, तो शरीर में पानी बना रहता है, they automatically will hydrate. Now another thing about exercise, mostly people are talking only about food and about water, keeping yourself hydrated, drink juices, eat this, eat that, eat rice, eat chapati, don't eat bajra, all that. But nobody tells us about exercise, you know. इस सीजन में I told you to start with, आपका बल कम है, डाइजेस्टिव पावर कम है, इसलिए लाइट फूड्स खाए. अभी बल कम है इसलिए एक्सरसाइज भी तो कम करनी चाहिए, लेकिन वी फॉलो अवर सेम रूटीन ऑफ रेजिम ऑफ अवर वर्कआउट थ्रू आउट द ईयर. जो वर्कआउट करते होंगे वो उनके जिम में उन्होंने जो भी किया है वहां जाके भारी भारी वेट्स, भारी भारी एक्सरसाइज रोज करते हैं, लेकिन सीजन के अनुसार एक्सरसाइज पैटर्न भी चेंज करना चाहिए. इस सीजन में आपको क्या चाहिए? शांति, क्योंकि चिड़चिड़ापन इंक्रीज होता है ना समर में, तो ये चिड़चिड़ापन कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी वैसे करनी चाहिए जिससे शरीर शांत हो. यहाँ पे इस सीजन में योगासन जो है, लेस उछलम कूदम करने वाले कम एक्सरसाइजेस करें. ओके, जो ज्यादा ये ऑल सब यू डू इट लिटिल बिट बिकॉज द शरीर नीड्स एक्टिविटी, बट इससे वात और बढ़ता है. आपको ये शायद पता नहीं होगा कि कौन से एक्सरसाइज करने से शरीर में वात बढ़ता है. जिनको वात का प्रॉब्लम है वो रनिंग वनिंग ना करते हुए शांति वाले एक्सरसाइज अधिक करें. बॉडी को उतना ही एक्सरसाइज मिलेगा, शरीर को उतनी ही मसल्स को, सबको जो भी है ट्विस्टिंग टर्निंग हो जाएगा. इनफैक्ट योगासन में आप अलग अलग प्रकार के जो योगासन करेंगे उसमें वन ब्यूटी ऑफ योगासन इज दैट आपके ऑर्गन्स, इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक सतह होती है, थिन, देयर इज अ थिन लेयर ऑन दैट. ये जो लेयर है इसको भी एक्सरसाइज मिलती है, सॉफ्ट ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिलती है. मोस्टली पीपल फोकस ओनली ऑन द ग्लूटियस, ऑन द the shoulder muscles and all these quads and all core, abdominal muscles, ये सब पे सब फोकस करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अंदर हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है ना उनको भी एक्सरसाइज चाहिए, और ये एक्सरसाइज शरीर को योगासन से मिलते हैं. So I am not anti other exercise. I myself do all exercises. But आपको अपने हिसाब से, your trainer will tell you XYZ things, because with due respect to your trainer, he or she may not have the knowledge about what asanas or what exercises can do to pitta kapha vata imbalance in the body. Everybody cannot do the same thing. So what you can do is, for yourself, at least घर में आप सूर्य नमस्कार या थोड़ा सा कुछ light exercise करें. Okay, keep the exercises light during summer. As it is, you are losing out on of body fluids, etc.
So some of you might think it is a good way to lose weight. If you want to lose weight in summer, then do more breathing exercise. Okay, now this is one simple formula. This is not about summer, winter, rain, whatever. This is something for life. शरीर में जो फैट है ना, फैट, ये फैट को तोड़ के, फैट जब टूटता है तो दो ही चीजों में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आप सोचेंगे हे भारी भरकम फैट, बनता क्या है, पानी और धुआं. एक्चुअली लेकिन इसके लिए, ये फैट को ब्रेक करने के लिए ना बीच में कुछ चाहिए, वो है ऑक्सीजन. अभी आप देखेंगे प्राणायाम यहाँ कितना यूजफुल होता है. आप जब सांस, गहरी सांस लेते हैं, आप शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, तो ये गहरी सांस से ऑक्सीजन जो शरीर में जाता है, ऑक्सीजन हेल्प्स द फैट टू ब्रेक डाउन, and it will break down only into carbon dioxide which you exhale, and water which you leave out from the body in the form of sweat, in the form of urine, etc. So fat टूट के यही दो चीजें बनता है. अब ये केवल ऑक्सीजन के वजह से होता है. इसलिए आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, द लॉजिक बिहाइंड दैट इज एक्सेल इनहेल, जो बोलते हैं ना आपके ट्रेनर बोलते होंगे इनहेल एंड एक्सेल. वो क्यों बोलते हैं? ऑक्सीजन जब जाता है तब फैट ब्रेक होता है. अभी समर में आपको फैट ब्रेक करना होगा, तो आप प्राणायाम से कर सकते हैं, अनुलोम विलोम से कर सकते हैं. अनुलोम विलोम इज दैट, एक बंद करके यहाँ से सांस ले और फिर पकड़ के रखे और फिर यहाँ से इनहेल एक्सेल करें, ये जो चलता है ये. आप शीतली प्राणायाम, ठंडा शरीर को. ओके, लेट मी नॉट मिक्स. सो वेट रिडक्शन के लिए, इफ एट ऑल यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, then do yogasanas and do breathing exercises. They will help keep your body, I mean it will help to break the fat. ना बॉडी को आसन के से कूल रखना यदि है, तो यू कैन यूज शीतली एंड शीतकारी प्राणायाम, जो योगासन में करते हैं हम, प्राणायाम में करते हैं. तो सिंपल है, ये अपने टीथ है ना, टीथ के पीछे जीभ रखनी है एंड ये करना है. इससे आप देखेंगे ठंडक महसूस होती है. Okay, so of course you please learn it with a good from a trainer, so that you will get to know how to do it technically. But what I am trying to tell you is शीतकारी एंड शीतली, जब बहुत गर्म, आप धूप में कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपको गर्म लग रहा है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं. टीथ को साथ रखना है, जीभ टीथ को टच करनी है पीछे से, और मुंह बंद करके वो सांस अंदर. So that is, you will feel cool. Do it 3-4 times and you yourself will feel cool. Another is जीभ का ये ऐसा रोल बनाना है. Means you inhale by making that roll of your tongue and inhale from here, and then shut your mouth, hold the breath and then exhale. You will see that your body will feel cool. ये cool करता है अपने body. Okay. Another thing that you can avoid doing in the season, normally you should also avoid, आपको शरीर में आपकी जो यूनिवर्सल एनर्जी है ना, ठंडक में हमें वो ट्रैप करनी रहती है. इसलिए आप हैंड्स क्रॉस करते हैं, या ये शिवलिंग जैसा बनाते हैं, या फीट एंकल्स क्रॉस करते हैं. इस सीजन में क्रॉस मत करिए ज्यादा. इट इज नॉट गुड टू क्रॉस बिकॉज यू ब्लॉक योर एनर्जी चैनल्स, बट डोंट डू इट बिकॉज इट विल कीप योर बॉडी वार्म. ये जब हम क्रॉस करते हैं हाथ या पैर एंकल पे, जब ऐसे यूं पैर को क्रॉस करके रखते हैं ऐसे, ये सब क्रॉस करने से ना एनर्जी चैनल, एनर्जी हम ट्रैप करते हैं, तो हीट शरीर में बढ़ती. तो इसे आप ओपन रखे जितना, तो you automatically will feel cooler also. So these are some of the things which you can do externally to cool you internally. आप समझे? तो बाहर से हम ये कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल हमें सूदिंग लगता है. So this is something that you can do. And exercise बहुत ज्यादा वात वाला, भागने वाला. Now somebody might say I only run, that's the only exercise I do. Then do it at a milder pace. आप करते ही होंगे, तो I don't want to change your pattern. ठीक है, you may gradually change it when you are light and comfortable with it. I am not here to impose anything on anybody. I am just telling you what is possible, what we can do, what will help everyone. So शरीर को इस समय कूल रखना जरूरी है, बिकॉज ये आप वात इंक्रीज करने से, वात वाले डिसीजेस को आप इन्विटेशन दे रहे हो, एंड पित्त इंक्रीज करने से, उष्णता जब बढ़ेगी तो पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ने से एजिंग होता है. नोबडी लाइक्स टू ग्रो ओल्ड अर्ली. सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई कैन यूज एंड से, चलो पित्त इंक्रीज होगा तो व्हाइट हेयर बढ़ेंगे, या ओल्ड एज ज्यादा जल्दी आ सकता है आपको. तो ये सब चीजें जो, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट. सो पित्त ना बढ़ाए, इसके लिए आप कोशिश करें. सो इन दैट केस यू कैन अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स व्हिच विल otherwise cause imbalances.
So we have spoken about food, we have spoken about water, we have spoken about the kind of exercise. Now, the other thing which is most important and very, very important during this season to keep your system cool, system in shant, is to, okay, if I use the word meditate, some of you will say, Arey, ye gyan dene lagi. So I will not use the word, I will say relax, do anything that relaxes, listen to music that relaxes you. You will see automatically your body becomes cool. Your body becomes cool when you meditate. Your body becomes cool when you listen to soothing music, not the dan, 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 dan. You know, that noise always increases, always causes imbalance. Noise is transmitted through air. You know, sound jo hai wo vacuum mein sound nahi hota. You will see that sound travels through air. So air element will always cause this kind of imbalances. So आप देखेंगे इस आपके शरीर को शांत, मन को शांत रखना है तो keep the noise levels less. Noise को आप imbalance होने ना दे. आप आवाज वाली चीजें ना, शांत वाली सूदिंग वाली चीजें सुने, तो you will see it makes a difference. Meditation is a very good way of keeping your body cool. Okay, why? Again, simple logic. In meditation, what do we focus on? Breathing. Inhale, exhale. Deep inhale, hold, exhale gradually. Inhalation, when you inhale deeply, it gives you that sphurti. When you exhale, it causes relaxation, right? So जितना ज़्यादा like exhale आप करेंगे, forceful नहीं करना है, शांति से करना. So this just deep inhalation and exhalation is, when you do meditation, you focus on your breath because your mind will go in 100 directions, 100 thoughts will come. So the minute you focus on inhale, tell yourself from within, inhale, hold, exhale. When you do this to yourself, simple, your body relaxes, your mind relaxes, and your body is cool. Your mind is cool. So breathing is one of the best ways to, अब कहते हैं ना जब टेंशन हो जाता है, अब क्या बोलते हैं, शांति से बैठ के सांस ले, गहरी सांस ले, तो यही काम होता है उसका, to cool the body, to soothe the body. Okay, somebody asked about that खस. It's simple. खस की मूली आती है, खस का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, पर उसका वो सेडिमेंट होगा, मटके वटके में डालना है तो ये मूली मिलती है, उसकी रूट्स ऐसे ऐसे बंडल बंडल किया हुआ ऐसे राउंड राउंड मिलता है बाजार में, आप जाएंगे, या फिर ऐसे बांधे हुए लंबे लंबे मिलते हैं, तो उसको धोना है बस, ताकि उसमें कोई समझो मिट्टी विट्टी लगी हो तो वो धोना है, और वो आपके मटके में एक ऐसा बंच मिलता है, कितनी मात्रा ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन यूज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल, लाइक यू कैन से 50 ग्राम्स का उसका वो जो गुंडी आता है, वो आप पानी में रखें, आपके मटका का साइज उतना 5 लीटर का मटका होगा, उसमें आप रखते हैं नीचे, रोज निकल आप मटका धोते हैं तो वो धोता के पानी में धोए, वापस उसमें डाल दे, एंड यू कैन यूज इट ऑल राउंड द ईयर. मीन्स अभी समर पूरा आप वो यूज कर सकते हैं, बाद में उसको सुखा के रख सकते हैं, वापस नेक्स्ट समर में भी यूज कर सकते हैं, वो अच्छे से बांध के प्लास्टिक या कवर करके रखते हैं ताकि मट्टी वट्टी नहीं जमे उसमें. सो यू कैन यूज दिस खस, यू कैन यूज राउंड द ईयर, एंड इट गिव्स द वाटर नाइस फ्रेग्रेंस. दैट ऑल्सो फ्रेग्रेंस ऑलवेज आप देखेंगे ना, आप फूलों का, आई मीन मेन मे नॉट कनेक्ट वेरी इजिली, बट विमेन माइट, आजकल वो फैशन चला गया, लेकिन हम बालों में गजरा, ये मोगरा वोगरा क्यों डालते हैं, ये अपना एरोमा थेरेपी तो है. This is not, it makes you feel shant because you're, you know, it cools. These are all jasmine, all these flowers are soothing. They're all cooling. And that is why these waters of these, या fragrances इत्तर है इसका, या fragrance है इसका, या बाल वाल में डालते हैं, तो इससे ठंडक शरीर को मिलती है, शरीर को, सर को. Okay, one more thing I can tell you is for those who have a lot of heat, सर में गरम यहाँ रहता है, बहुत गरम रहता है, तो दो चीजें कर सकते हैं. One which you can do at night on weekend, कैस्टर रहता है, कैस्टर, एरंडेल पता होगा, कैस्टर का प्लांट ना हर वो नाले वाले के पास में उगता रहता है, उसको पपाया जैसा लीफ रहता है, ऐसा 5 ये वाला लीफ रहता है ना, इसको थोड़ा सा घी लगाएं और सर पे रखें, रात ये बांध के रखे, या उस पर कपड़ा बांधे, या एक डोरी से उसको रबर बैंड डाल के डाल दे, सो जाओ. मॉर्निंग हीट के वजह से ना एक्चुअली वो सिकुड़ जाता है, कड़क हो जाता है, पूरा हीट निकलती है. जिनके स्पेशली बच्चों के आप ये कर सकते हैं, बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं ना, बहुत उछलम कूदम हाइपर रहते हैं, ये हीट की वजह से उनको ये त्रास होता है, तो यू कैन डू दिस. इट टेक्स अवे द एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी. दिस इफ यू डोंट लाइक इट, यू फील ये घी फिर बाल धोना, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है. इफ यू डोंट लाइक दिस, यू कैन डू अनदर. तुलसी, 4 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा तेल, इनको उबालो,
जब तक पानी उड़ ना जाए इसमें से, पानी उड़ जाए तो बाद में इसको स्ट्रेन करके रख देना, और ये जो तेल है वो सर पे थोड़ा सा लगा दीजिए, शरीर will be cool. You can use this, do this for a couple of days so that you feel it. So these are certain things by way of which your system, it is not temporary cooling. Unlike your AC and all, temporary cooling. अभी यहाँ पंखे से हट जाओ या बंद करो, you will start sweating. पर ये सब चीजें जो है ये internally आपको cool करती हैं, and this is necessary to keep you going through the summer. It is not that the body will stop losing water. The body will, when you go in the heat and all that, it will happen. But these are ways in which you will keep your system cool by balancing the three doshas. These will help to balance. That is, in some way or the other, they will limit the imbalance. So that is why you need to use some of this. So मैंने अब तक in the things that I have said, I have spoken about foods being light. The food that you will eat has to be light on your digestive part, so on your digestion, so that you will not eat the heavy beans and all. You can avoid in this season. This season will end once once rain set in, the season will change. But till then, okay. Now somebody will ask me immediately after the session, can we eat mangoes? Of course you can eat mangoes, but you will keep it restricted to 1 mango a day. Only 1 mango a day. Okay, इससे ज्यादा आप खाएंगे तो उष्णता बढ़ेगी. इसलिए आम के साथ आपने देखा होगा आमरस वगैरह में 1 चम्मच घी डालते हैं, थोड़ा सा घी डालते हैं, या कई लोग थोड़ा सा सूंठ और वो डालते हैं, इलायची पाउडर. क्यों? वो हीट उसका कम करने के लिए. हीट इन द सेंस इट इज नॉट द फ्रूट विच इज कॉजिंग हीट, इट्स द शुगर्स इन दैट विच सम पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट. कुछ लोगों को ये जो बोलते हैं ना आम खाने के बाद फोड़े आते हैं, ये सर में फोड़े आते हैं, ये आते हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द शुगर इन आम. आम on its own is not a heaty fruit. आम actually is a soothing fruit. इसलिए तो वो इस सीजन में आता है और हमें खाना है. लेकिन अधिक मात्रा में कोई भी अच्छी चीज भी खाए तो भी बुरी है. एंड ये जो है आप देखेंगे आम का शुगर डाइजेस्टिबल होने के लिए हम उसमें थोड़ा सा घी या थोड़ा सा सूंठ या थोड़ा सा कार्डमम डालते हैं, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ये डाइजेस्ट कर सकते हैं शुगर इसका. अदरवाइज आम इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. हाँ, कच्चा आम देखिए, कोई भी कच्चा फ्रूट से एक याद रखें हम कि जिनको पित्त का प्रकोप होता है, पित्त की प्रकृति होती है ना किन लोगों की, वो कच्चे फल ना खाए तो अच्छा है, सीजन में हो या ना हो. यू नो व्हाई? बिकॉज कच्चे फल से एसिडिटी बढ़ती है. फिर वो खारिक भी कच्चा हो या आमला भी कच्चा हो या कोई भी, कच्चे से पित्त बढ़ता है. तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो ये न खाए, या तो उसमें ऐसी चीजें डाले जिससे ये कट होता है. सो कच्चा आम खाना चाहिए, मिलता है इस सीजन में है तो यस यू मस्ट हैव. वो आप नमक मिर्च तो थोड़ा सा वो डाल के कच्ची कैरी खाते हैं, या फिर उसका पना बनाते हैं, या इसकी चटनी बनाते हैं, या इसको दाल के साथ वो लेते हैं. सॉरी, somebody's mic is on, I think. Can you just turn that off? Yeah, we've done that. Okay, छाया जी आपने हैंड रेज किया है. Yeah, we'll take some questions now. Yes, yes. छाया जी please unmute करिएगा. Yeah, hi. So here this is kokum ka kuch hai. Kokum tail. This you can use. Where it can be used? Somebody got it for me from Goa. Yeah. On your feet, it's very, very effective to take away pain in the feet or the heat in the body. I would have mentioned this, but I saw that there were many people who were not from Maharashtra, would probably not know it. But this is very, very, very effective to take away the heat. It is called, this is कोकम जो रहता है ना, कोकम का हम कड़ी बनाते हैं या कोकम जो दाल में डालते हैं, तो ये जो फ्रूट रहता है इससे ये जो तेल निकलता है इसका ये गुंडा ऐसे बॉल बनाते हैं, और इसका थोड़ा सा पार्ट या इसको रगड़ के भी आप यूज कर सकते हैं फीट में, तलवे पे, तो इससे हीट निकल जाती है. पित्त शामक, पित्त को कम करने में बहुत यूजफुल रहता है. अच्छा, तो ये पैर को रात को घिसने का, कैसे करने का? हाँ, आप इसको रात को घिस सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसका भाग जो है थोड़ा सा काट के वो एक छोटा सा बॉल लेके पैर को आप घिस सकते हैं, पैर में आप लगा सकते हैं इसको. And let it be overnight. Yes, let it be overnight. Wash it away in the morning. Wash it away in the morning. Yes. Okay. And this has to be stored in the refrigerator or outside? No, just outside in the in a airtight container, and it stays for years. Yes. Okay. It'll stay for years. Okay. Yes. And another thing, some people have got vat. So in the month, हम लोग गुड़ी पड़वा के दिन we eat the kadu limda. हाँ.
So see, but along with that kadu limda, you are eating jaggery. There are so many things. वो चटनी रबसी ये बहुत important है. हम उसमें से ना एक एलिमेंट निकालते हैं और बोलते हैं ये इससे ये होता है, लेकिन हम वो कॉम्बिनेशन इसलिए बनाते हैं ताकि ये imbalances हट जाते हैं. And that you eat in Vasanta Rutu, na Chaitra is that is Vasanta, that's not Grishma. So that is Vasanta Rutu. हालांकि तब भी digestion थोड़ा कम ही होता है, धीरे धीरे वो weaken होते जाता है. Digestive अग्नि जो है वो वसंत से और कम होके समर में it's at the lowest in summer. Summer and early rain. और मेथी का दाना रात को सोख करके बोलते हैं, तो all the year round it is good generally. Now see those who are diabetic, now they have a condition. Okay, when there is a condition, you have to follow certain things for that condition. तो उनके लिए उस टाइम पे वो खाना जरूरी है, इसलिए. और कितने मेथी दाने यूज करते हैं हम? थोड़ा सा यूज करते हैं. We use just 10-20 seeds we are taking. We are not going to eat बर्तन भर के या वाटी भर के नहीं खा रहे. So this, when you're having that in small quantity, it is not, and it's to take care, counter a situation in the body. वहां पे आपको ग्लूकोज लेवल्स जो है वो उसको कम करने हैं, इसलिए आप खाते हैं. So that is fine, but it's not like आप मेथी के लड्डू खा रहे हैं रोज के रोज ना. So that is fine. मेथी का लड्डू में जो प्रमाण मेथी का रहता है और वो जो कॉम्बिनेशन रहता है वो, और ये मेथी के दाने अलग थोड़ा सा खा रहे हैं हम, वो शरीर के लिए वहां पे जरूरी है. बिकॉज वो कंडीशन है, प्री डायबिटिक है कोई या डायबिटिक है, तो वहां वो कंडीशन के लिए रहता है. So there are certain things we do as a normal routine when the health is good, and there are certain things we call that pathya when that sharir needs it. That is important. So you can continue having it if you need to have it because of diabetes. Oh, I know somebody has got what you call that, arthritis. So arthritis. They said arthritis. So somebody suggested you have methi ka dana every day in the morning. See, methi ka dana, yeah, it is not for arthritis specifically. That is not, that is specifically to take care of other causes which cause arthritis. Okay. So for arthritis per se, and that is very little. बात बढ़ाने नहीं देना है. वो side to along with it, that oil and the ghee, all those things have to be taken care of. Arthritis है तो yes, that is आम वात, because the शरीर में से वो निकालने के लिए, आम भी निकालने के लिए, you will have to take care of certain things. Great. So Ruchita ji, and always take advice from a doctor for a particular condition. Okay, please refer to a doctor when you are a good vaidya when you are having a specific condition, because her body में there will be some things which everybody will have. There will be some certain conditions which can get aggravated for that particular person. It may not get aggravated for somebody else. So that is why in a specific condition, you must always consult a vaidya or a good doctor and take his or her advice. Yes, you are Bombay based? Are you Bombay based? I'm in Mumbai. I live in Mulund. Shreya ji will connect you on the group. Thank you. Thank you. Let's take question from Sri Kumar. Shamla ji has raised her hand. Ruchita, Sri Kumar has a question. Is it right to cook vegetables with powdered spices? And then we can take Shamla's question. Yeah. Oh, sure. Whosoever. Yes. What's the question? Sorry. Is it right to cook vegetables with powdered spices? To have powdered spices means, can that question be further elaborated? Sri Kumar, would you like to unmute yourself and please ask the question? ये पूछ रहे हैं कि vegetables को powdered spices के साथ cook करना ठीक है क्या? See, ठीक and गलत ये बात नहीं है. आप देखिए, हम जब कोई भी चीज पाउडर में डालते हैं और साबुत डालते हैं, उसका प्रमाण अलग होता है. देखिए, साबुत में आप 2-4 दाने डालेंगे, 10-20 दाने डालेंगे, और जब आप पीस के डालेंगे तब उसमें आप अधिक मात्रा में डालेंगे, बिकॉज आप 1/4 चमचा डालेंगे तो या 1/2 spoon डालेंगे, तो there is more quantity that goes into it. So you have to see what the spice is and what the purpose is. Okay? Madam, that's not what I meant. See, when we are powdering and keeping spices, will that powdering itself increase the acidity in that particular ingredient? Oh, process. Okay, you are talking about the ingredient per se. See, processing, yes, processing will affect, but हमेशा हम powder करते हैं heat के साथ. पहले heat करते हैं, उसके बाद में powder करते हैं. Right? No, even then, if you keep it powdered and keeping it chilli as such and then using it, won't the acidity increase when you keep powdered things? As it increases the surface area. No, not necessarily. Not of every spice. In fact, we use certain spices. If you see, if in a traditional way, if you see, you will see for peppercorn and all, they'll say just crush it slightly and then use. Why? Because it will be easy to release its things.
the active ingredients in it. Even jeera, sometimes you will boon and then you will say crush it like that and then put it. No. Why? That is, no, madam, you are crushing and using it immediately. What I meant is you are crushing, storing, and then using. Not necessarily, not for every spice. It's not that every spice will become acidic on powdered and stored. See, what happens is when you are storing, when you're powdering and storing, you're exposing it to air. So the reaction takes place. That is why we always freshly powder. You avoid stored powdered sugar, these masalas. Yes. But they become convenient, and that is why you buy all this Everest and whatever other. But we avoid it. As far as possible, we avoid. That is why traditionally in our homes, we would not powder spices and keep. We would keep only certain specific spices powdered, like haldi you have, then mirchi you have, then you have garam masala. That you powder and keep because you're using them in a particular combination when you make that masala and keep. So it's better to use them freshly powdered, but you cannot see, I mean, a home where, like for me, now by I finish the session, I'm supposed to catch the 9-9 train. If I have to do such juggling of all my time and everything, I have to compromise on certain things, but I have to knowingly compromise. Yeah, I agree. I agree that it's a compromise, but that's okay. My next question is, Mataji, that when you are using turmeric, there are two ways by which it is processed. Some people boil it and then dry and powder it. Some people dry it and then powder it. That is without boiling. Which is the right method of using turmeric? See, there is no, when you are using it, it depends for what you're using. When you're using it masala, it is better to boil it and then powder it, because in the boiling process, there is a curcumin release. You know that haldi is, what is most important in haldi is the curcumin, okay, curcumin content. And this curcumin content again will depending on the type of haldi. You will see that range from right from 1 point something to 11 point, depending on which region it is grown, blah, 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 all those things. So the best way to do it is to boil it, and boiling also is done there is a specific way to boil it. It has that steam, you put it in the steam, that steam is released, you will boil it, then after that you take it out, you will sun dry it, and then after that the fingers that are formed, you will keep them like that, or you will powder them. So there are different ways. This is the correct way of processing it. This boil and then powder. All right. Okay. Thank you so much, Ruchita ji. I think the time is up already. So we'll take other questions in the group. I have already put the links for the group. Please join whoever isn't already there. I'm sure everyone is already. But at this point, I'd really, this has been phenomenal and so useful, Ruchita ji. As usual, each of the your sessions, Yuktahar sessions, have been very timely and very holistic, if I have to say. उसमें आपने एक्सरसाइज में क्या करना है, खाने में क्या करना है, सोचने में क्या करना है, मेडिटेशन में क्या करना है, एवरीथिंग इज इन योर, आपकी सारी जो नॉलेज है कॉम्प्लेक्स, it is all coming to a holistic view of how you present it, and for us that has been the most useful. I'm sure हर एक के मन में बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है. उसके लिए वी कैन कनेक्ट विद रुचिता जी पर्सनली, and you can connect with any one of our super leaders to connect you to her. And at this point, I'm really going to thank Ruchita ji for taking out her precious time. She is a jet set traveler. कल वो जम्मू कश्मीर में थी, फिर भी उन्होंने हमारे लिए अपने कमिटमेंट और टाइम दे करके आप सबके सामने she is here, and every time it's a contributory space. Thank you so much, Ruchita ji, for this. And क्योंकि हम ये फाइनल सेशन रख रहे हैं एक्सपर्ट स्पीक का फॉर द होल ईयर, it's more special that you are with us. Secondly, I would like to thank all of our viewers, all of our participants जो इतने प्यार से सुबह सैटरडे रेगुलरली आते हैं. यहाँ पे कई हैं जो एकदम रेगुलर है, देवेन है, so many people are regularly coming and attending the sessions. आप ही के लिए हम लोग करते हैं. It gives us that kind of fulfillment. So thank you for giving us that. And lastly, I am going to thank my super leader team, my 6 superpowers, starting with our, the person who founded, thought of this idea of Plant to Win, Darshana Falke. I'm going to thank her for her amazing bubbling energy and the dynamic spirit and contributory spirit she has. I'm going to thank our Professor Arun, who is a master of productivity training and again super contributory space. He is right now in Bangalore. We have all
benefited hugely from this, from where we were last year to where we are right now. Each of us in our personal spaces has almost come 360 degrees, friends. I'm sure each of you who has stayed with us has also has significant changes in their lives. I'm going to thank our dear Vikas, who has been our sage, young, wise sage for us during Plan to Win. He has been the model of commitment. Every morning, same time, rain, sunshine, hail. He is there to hold the space of meditation and to keep all of us in a great visualization space, manifestation space. I'm going to thank our dear, the Laughter Buddha, Seema Badaya, my dear friend from Jaipur, who has, from her energy and the way she connects with each of you, she's always ready to serve, help, contribute. She's an amazing person at heart, very warm. Thank you, Seema, for your gregarious space and the joyfulness that you bring from your laughter sessions. And you've been a great partner with me in the fitness sessions for almost about 8 months, and our fitness journey has been terrific. Thank you so much. And I'm going to thank our dear Shalaka, who is a model of zip, zap, zoom, and quick learning. She has been the techie person. She has been of great support. She's quite talented in different fields and has given many sessions, hobby sessions, and conducted all the technical sessions throughout Plan to Win. So hats off to Shalaka and her spirit. And lastly, I'm going to thank our police, and the most wonderful policeman I've ever met in my life, Rajesh, who's changed the meaning of the services for me at least, and for a whole lot of others, who's the most gentle, the kindest, the warmest and giving policeman I've ever seen. And he is a learner for life. He's a library in itself of books, and whoever has asked has got more than ample. Anytime ebooks and financial support, Rajesh has been there for us. I'm going to thank each of my dear 6 people, and the 7th is myself. So I call it rainbow, and we have been doing this as a beautiful rainbow, and I hope you have been getting results, all of you. I'm also going to thank a lot of us here who have been participants, and not only participants, but have also been on our expert speak sessions. Shamala, and I can see so many people who have benefited, who have been through the program in whatever capacity. I thank you from the bottom of the heart. You don't know what kind of fulfillment you've given all 7 of us. Thank you so much. And now I hand it over to Darshana. Darshana, if you have any final words, please share it with our community. Thank you so much, guys. I can't tell you the amount of love, that we have got in this community is amazing. और आप लोगों के लिए जितना हम करें हमको कम लगता है, because the amount of contribution we are doing, we are getting contributed multiple times, and we also know that all our super leaders, because the pandemic is taken away, I mean the lockdown is taken away completely, so just because of want of time, we are just taking a break for some time. We are going to resume with the new avatar, and stay tuned in our groups. I've just shared the link. Archana was asking for the link, so I've shared the link. Join our group and just wait and watch. Something even more amazing is coming up in all our sessions and all our trainings. So looking forward to have you all with us lifetime. Thank you, and God bless you all, and we'll meet soon. So expert speak is not going to happen for some time until we update you about the time, day, and the format. Okay. So stay connected and stay blessed. Thank you. And Gitanjali, you can close the meeting, and really acknowledge each of my super leaders. I love you all. Bye.
Seema is here. Seema, do you want to say something? Hello? Was I audible? You are on mute, Seema. Thank you, everyone. It has been an amazing journey with Plan to Win, with you all. And we love you all the way, you have created energy and been with us throughout the whole year. Expert speak session, definitely we had various topics, various speakers, and we just wanted everyone to be enriched with knowledge. Our journey, has been commendable, phenomenal. That's what I would say. And we'll be back with more energy, more superpowers, and we are going to rock together. So all the best to all of us, and have a great journey ahead in your life. Yeah. Thank you. Perfect. So Gitanjali, I think, has logged off. I don't know. By mistake, whoever is the host. So I cannot not thank Ruchita. Ruchita, you are giving such insights. I'm sure that सब लोगों की life में एकदम क्या कहते हैं उथल पुथल भी हो रही है because of your suggestions, and it's really, really valuable. Yeah, and I'm going to meet you personally very soon, Ruchita. Sure. We are going to take a photo and put on our group. So yeah. Okay, thank you. And whoever is the host, can you please close the meeting? Because I cannot do. Okay, Vikas is there. Seema, can you close the meeting? Yeah. Bye-bye.